Our today's class is for 12th class. As you know, our subject is geology, earth science. Our today's topic is unconformity. Unconformities are formed in the rocks. Basically, what are unconformities? Unconformities are formed when there is a break in sedimentation. The rock structures or the rocks, we can say, these are formed by the sedimentation, especially when we see the sedimentary rocks. These are formed due to the sedimentation. When the layers sediment one over the other, or we can say that the sediment is deposited in the different layers. When these layers show the continuity, or we can say when there is a continuous process of sedimentation, we can say these rock beds are conformable, that they have been formed from time to time. But when there is a break in sedimentation, when after a period of time, or we can say when there is a break in a period of time, for example, it can be a period of 1 year or more than 1 year, or it can be less. So when there is a break in sedimentation, we can say that the conformities are formed, or unconformities are formed. So conformity means those beds which are formed continuously, and unconformity means when there is a break in sedimentation. So there is no continuous process of sedimentation, that there has been seen that there is a gap or there is a break in sedimentation, then we can say that there is an unconformity. So when the sedimentary rock beds are found to have been deposited without interruption, when there is no interruption, when there is a continuous process of sedimentation, they are said to be conformable beds. When there is a continuous process of sedimentation, or when there is no interruption in deposition, then we can say that those beds are conformable. But when there is a major breaks in sedimentation, then we can say these are unconformities. When there is a break in sedimentation, simply we can, when say there is break, we can say that there is unconformity. Thus, an unconformity may be defined as an old surface version which separates younger series of rocks from the older series. A old surface version which separates old rocks from the younger series of rocks. That is known as unconformity. So that break, the major break which is formed in between the older series of rocks and the younger series of rocks, that is known as unconformity. Simply we can say this is a break in sedimentation. अगर हम कोशिश करेंगे आसानी से जानने के लिए सिंपल लफ्जों में कि ये अनकन्फर्मिटी क्या चीज होती है, जब आपको पता है जब रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, वो लेयर की शक्ल में हो जाती है, और उन लेयर्स कैसे बन जाते हैं, वो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट जब डिपॉजिशन टेक्स प्लेस हो जाती है, डिपॉजिशन हो जाती है सेडिमेंट्स की, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस सेडिमेंटेशन की हो जाती है लेयर बाय लेयर। एक वक्त ये भी आता है जब ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो होती है ये रुक जाती है, इसकी ब्रेक हो जाती है सेडिमेंटेशन की, तो उसको हम अनकन्फर्मिटी कहते हैं। दूसरे लफ्जों में जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये जो सेडिमेंट्री रॉक बेड्स होते हैं, जब इनमें हम ये चीज देखेंगे कि इसमें डिपोजिशन कहीं नहीं रुकी है, कोई इंटरप्शन नहीं हुआ, कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन टेक्स प्लेस, then these are known as conformable beds. Then these are two words, confirm and unconfirm. Confirm means when sedimentation takes place without interruption. In other words, we can say sedimentation takes place continuously.
sedimentation takes place continuously without interruption, then these are known as conformable beds. These are the sedimentation takes continuously. In other words, when there is a major break in sedimentation, जब ब्रेक हो जाती है, सेडिमेंटेशन रुक जाती है, ब्रेक हो जाती है, वो पुरानी जो कंटिन्यूअस प्रोसेस वो रुक जाती है, खत्म हो जाती है वहां, और वो पुराने बेड्स कुछ वक्त के बाद फिर से सेडिमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, इसमें जो गैप आती है उस गैप को, उस ब्रेक को हम कहते हैं अनकन्फर्मिटी। सिंपल लिहाजा अनकन्फर्मिटी हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो ओल्ड वर्जन्स के रॉक सरफेस जो होती है, ये ओल्ड वर्जन की जो रॉक सरफेस होती है, यहाँ तक जो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस प्रोसेस सेडिमेंटेशन में हुई थी, लेकिन यहाँ एक ब्रेक हो जाती है। ओल्ड वर्जन जो सरफेस है वो यहाँ से अब नया वर्जन स्टार्ट हो गया है रॉक्स का, यंगर सीरीज रॉक्स का। इन बीच, दोनों के बीच जो एक गैप आती है, वो गैप अनकन्फर्मेबल होती है, उसको हम समझ नहीं पाते, वो एक ब्रेक आ जाती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं आ जाती। इस गैप को, इस अनकन्फर्मेबल ब्रेक को, इसको हम अनकन्फर्मिटी कहते हैं। सो दिस वाज रिगार्डिंग द अनकन्फर्मिटी। इट इज सिंपल, this unconformity is basically just a break in the process of sedimentation. Simple.